चैप्टर क्या है? कंपेरेटिव डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। नेबर्स में हम क्या स्टडी करेंगे? चाइना और पाकिस्तान। तो इंडिया के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, जब से स्टार्ट हुआ है इंडियन इकोनॉमिक्स इंडिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990, फिर न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो यूनिट वन में ये था। फिर यूनिट टू में चैलेंजेस being faced by the Indian economy: poverty, human capital formation, infrastructure, employment, unemployment, rural development, environment. अब इंडिया एंड इट्स नेबर्स। अब पढ़ेंगे हम चाइना और पाकिस्तान के बारे में भी, फिर कंपेयर करेंगे कि इंडिया की पोजीशन कैसी है, ग्रोथ कैसी रही एज कंपेयर टू इट्स नेबर्स। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। जनरल नॉलेज, प्योर जनरल नॉलेज, बहुत इजी। इंट्रोडक्शन। In the preceding chapters, we have studied in detail all the aspects of the Indian economy, its problems, policies, and development. We know that the economies of the world have been classified into developed and developing economies. We know that the economies of the world have been classified into developed and developing economies. In the post Cold War period, post Cold War world, nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies. कोल्ड वॉर में आपस में ट्रेड ही बिल्कुल बंद हो गया था, तो उनको रियलाइज हुआ कि सेल्फ सफिशिएंसी बहुत जरूरी है, सेल्फ सफिशिएंसी बहुत जरूरी है। तो कोल्ड वॉर वाज द पीरियड फ्रॉम 1947 टू 1991. It was a sustained state of political and military tension between the powers of the Western world, led by USA and its NATO allies, and the communist world, led by Soviet Union, its satellite states and allies. इनके बीच में political and military tension, तो trade तो बिल्कुल बंद। तो it was during that period when nations realized that self-sufficiency is very, very important. Harmony is also definitely very important. So various steps were taken in that direction. Nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies. To this effect, they are also forming various regional and global economic groups such as SAARC, European Union, Asian, G8 is group of 8, G20 is group of 20, BRICS. क्या है ये सब? बस नॉलेज से हमें पता होना चाहिए फुल फॉर्म। सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इट वाज क्रिएटेड इन 1985. एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, created on 8th August 1967. BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa. It was formed in 2009. The idea was laid in 2006, but officially it was formed in 2009. BRICS. और नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फाउंड इन 1949. ये एडिशनल उन्होंने, मतलब ये आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है कि आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ईयर ऑफ फॉर्मेशन पता होना चाहिए, बट क्योंकि उन्होंने ये यूज करे, वो एक पॉइंट क्या कहना चाहते हैं? वो पॉइंट कहना चाहते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर द कंट्रीज रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड हार्मनी एज वेल. तो वेरियस ग्रुपिंग्स वर क्रिएटेड. उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी नहीं था, इट वाज आल्सो टू प्रमोट ट्रेड अमंग दीज कंट्रीज. तो रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स वर डन. Moreover, various nations are also trying to understand the developmental processes pursued by their neighboring countries, as it allows them to realize their own strengths and weaknesses in comparison to their neighbor.
okay, we are focusing on self-sufficiency, we are focusing on strengthening the domestic industry, but at the same time, we want to understand the developmental processes pursued by our neighboring countries as well, जो हमसे अच्छा कर रही हैं, क्या पॉलिसीज है उनकी, वो कुछ अच्छा कर रही है तो हम वो पॉलिसीज अडॉप्ट कर लेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ग्राउंड लेवल पे आप आओ, आपका कोई दोस्त अच्छा परफॉर्म करता है तो उससे पूछने में कोई हर्ज नहीं होता कि कैसे पढ़ाई करी, क्या सोर्स था आपका, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, और उसको अप्लाई कर लिया। वही सेम चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। Various nations are also trying to understand the developmental processes pursued by their neighboring countries, as it allows them to realize their own strengths and weaknesses in comparison to their neighbors. In the process of globalization, developing countries are facing competition not only from developed nations but from other developing nations. So, an understanding of the other economies in our neighborhood is required. तो वो भी हो रहा है। In this chapter, we will compare the trends in various economic and human development indicators, economic indicators as well, and human developmental indicators as well, of India, the largest democracy of the world with a secular and liberal constitution for over half a century, at least on papers, with its two principal neighbors, China and Pakistan, which China has recently started moving towards a more liberal restructuring of its command economy. That also on papers. Pakistan having an authoritarian, militarist political power structure. ये सही है. All the three countries, India, China, and Pakistan, have more than 6 decades of development experience behind them. We will also appraise the strategies adopted by these countries to reach their present state of development. Compare करेंगे economic and human development indicators of India, China and Pakistan. अब इंडिया के बारे में तो हमने बतेरा पढ़ लिया, थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेंगे, चाइना और पाकिस्तान के बारे में. डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. India, Pakistan and China have many similarities in their developmental strategies. All the three nations started their development path at the same time, almost the same time. India and Pakistan got their independence in 1947. People's Republic of China was established in 1949. Almost the same time. उससे पहले चाइना था, but People's Republic of China was established in 1949. All the three countries had started planning their development strategies in similar ways. India announced its first 5-year plan in 1951, very, very important date. 1951, India announced its first 5-year plan. Pakistan, 1956, and China, 1953. ये important information है काफी. India announced its first 5-year plan 1951, Pakistan 1956, China 1953. Since 2013, Pakistan is working on the basis of 11th 5-year development plan 13 to 18. Obviously printing के time ये information थी इनके पास. While China is working on its 13th 5-year plan. Pakistan 11th 5-year plan, China 13th 5-year plan. Until March 2017, India has been following 5-year plan based model till 2017. उसके बाद तो क्या, वो लास्ट 5-year plan जब खत्म हुआ था तो हमारा वैसे ही प्लानिंग कमीशन ही अबॉलिश हो चुका है, नीति आयोग है अब तो. अब हम 15-year plans बनाते हैं तो 5-year plan मॉडल तो हमारा अबॉलिश हो चुका है. पाकिस्तान का लास्ट 11 था, अब तो 12 चल रहा होगा. चाइना का 20th तक 16 to 20 13 5-year plan. India and Pakistan adopted similar strategies, such as creating a large
पब्लिक सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. India and Pakistan adopted similar strategies, like creating large public sector. Number one, raising public expenditure on social development. तो ये दो मेजर चीजें थी जो दोनों की स्ट्रैटेजी में सिमिलर थी. इंडिया ने भी देखो ना, इनिशियली डोमिनेंट रोल वाज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर, तो यहाँ पे भी था लार्ज पब्लिक सेक्टर और रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट की, focusing more on welfare of the people rather than profit maximization. Socialist approach thi, more of socialist, mixed economy with a socialist approach initially. Till 1980s, all the three countries had similar growth rates and per capita income. Till 1980s, all the three countries have performed differently thereafter. India and Pakistan have made slow and irregular progress as compared to China, which has made a miraculous progress. But before we make a comparative study of the three countries, let us first analyze the structure of economies of China and Pakistan. कह रहे कंपेयर करने से पहले कुछ चाइना और पाकिस्तान के बारे में हमें पता तो हो. तो अभी हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. डेट्स इंपॉर्टेंट है. Freedom, India and Pakistan 1947. People's Republic of China was established in 1949. India announced its first 5-year plan in 1951, Pakistan in 1956 and China in 1953. Similarities क्या हैं इनकी strategies में, ये बहुत important question बनता है.